Hello and welcome to Nid Studio guys, and this is your mentor Sanyukta Singh. And guys, I am here with a very important session on your demand, and that is how to do a write-up on any topic. So quickly, let's get started to this session. Write-up usually come on very few topics, and the topics are like color psychology, t-shirt designing पे आ सकता है, design inspiration पे आ सकता है, logos पे आ सकता है, and futuristic designs too. So basically in this session मैं हर एक category में आपको write-up कैसे लिखना है वो डिस्कस करने वाली हूँ. So I am starting it with color psychology guys. As per the question guys, if the emotions that are given in the question to depict in the grid, it might be meditation, it might be travel, journey हो गया, festival हो गया. So इस बार आया भी था meditation in the exam. So after filling the appropriate colors in the grid, what are you going to write in the write-up section? So let's discuss that. So the first point which you are going to write in the write-up is the inspiration guys. Now अगर कोई भी इमोशन आपको दिया हुआ है, like if enthusiasm, already I have solved a grid question in color psychology. So if you have not watched that session guys, please go and watch that session. And first of all, grid में सही colors depict करना is important. And after depiction, जब आप write up पे आ रहे हो, then the first point should be inspiration. What emotion you have taken and the colors जो आप उसमें depict कर रहे हो in that grid, that is taken inspiration from where? Like if I have taken enthusiasm as my selected emotion to be depicted on the grid, so I am depicting that enthusiasm taking an inspiration from sunflower, जो कि मैंने ग्रिड में सॉल्व भी किया है. सो इंस्पिरेशन इज सनफ्लावर. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई इंस्पिरेशन इन द फर्स्ट पॉइंट, दैट enthusiasm has been taken inspiration from sunflower. Now the second point would be colors. The inspiration will always depend on the colors. Now जो आप colors grid में भर रहे हो वो आपने क्या सोच के किया है, तो वो आपने वही सोच के किया है जहाँ से आपने इंस्पिरेशन लिया था. Now sunflower was the inspiration of mine. तो sunflowers के कलर कैसे होते हैं, आपके क्रोम येलो होगा, ऑकर्ड येलो होगा, बीच में थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होगा, हल्का सा ब्लैकिश भी हो सकता है बीच का पोर्शन जो है. सो दीज आर द फोर कलर्स ऑफ सनफ्लावर. एंड सिंस सनफ्लावर इज डिपिक्टिंग एंथुजियाज्म, तो since this was the inspiration, so I am going to depict all the four colors that I have chosen as my selected colors, which is the color of कलर साइकोलॉजी, जो कि ये पॉजिटिव इमोशंस को डिपिक्ट कर रहा है. लाइक येलो आपका डिटर्मिनेशन को डिपिक्ट कर रहा है, आपके जॉय को डिपिक्ट कर रहा है, हैप्पीनेस को डिपिक्ट कर रहा है. एंड सिमिलरली मैंने बाकी कलर्स के स्पेसिफिकेशंस लिखे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी इंस्पिरेशन एंड द सेकेंड पॉइंट इज गोइंग टू बी द कलर्स यू हैव चूजन एंड व्हाई यू हैव chosen and what are they depicting. So similarly guys, ये कलर साइकोलॉजी भी बेस्ड जो ग्रिड का क्वेश्चन आता है, इसमें हम इतना ही राइट अप लिखते हैं. Again, the write-up will always depend upon the question that is asked in your exam. So according to the question, I must tell you that there is a various kind of weddings which take place in India. Like there are several communities. Some community like bright colors, some like very pastel and soft colors. So accordingly, what kind of bag or the purse you are going to design, you will have to specify the community. In the first point of your write-up, what you are going to mention is the what inspiration you have taken. Like is it any flower, is it any architecture, is it any kind of surface technique from any religion, any place, any region from India. तो क्या है आप वो लिखने वाले हो. And in the second point, what kind of colors are complementing that very inspiration, आप उसको mention करने वाले हो. Again, if you have not gone through the color psychology session, go through it, and that will help you a lot to identify the colors and their emotions. Now the third point which you are going to write is for which age group, for whom you have made. Like पर्सेज एंड द क्लचेज एंड द बैग्स, ये हर कोई कैरी करता है. एक 45 to 55 एज ग्रुप की वुमेन भी कैरी कर रही होती है, एक 20 to 30 एज ग्रुप की भी वुमेन गर्ल्स कैरी कर रही होती है, टीनेजर्स के पास भी होता है. तो ये आप किसके लिए बना रहे हो, दैट यू हैव टू राइट इट इन योर, स्पेसिफाई इट इन योर नॉट स्पेसिफिकेशंस बट राइट अप. इट इज़ very much necessary. Now the fourth point can be
that what are the techniques that will be used. जब ये आपका जो क्लच है, जो एक प्रोटोटाइप है, जो कि आपने एक स्केच बनाया है, बट इन फ्यूचर दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी काइंड ऑफ लाइक लेदर हो सकता है, कैनवस हो सकता है, रेक्सीन हो सकता है, कॉटन हो सकता है, जूट हो सकता है, एनी काइंड ऑफ सस्टेनेबल क्लॉथ हो सकता है. तो किस पे आप इसको रिप्रेजेंट करने वाले हो एंड व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक्स यू हैव यूज्ड इन दैट वेरी पर्स. क्या उसमें हैवी एम्बलिशमेंट्स है, एम्ब्रॉयडरी है, या सिंपल प्रिंटिंग है, या स्क्रीन प्रिंटिंग है, क्या है, आप उसको भी बताओगे. एंड अगेन गाइज, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज 5 पॉइंट्स. लाइक नो वन इज गोइंग टू टेल यू टू राइट द मटीरियल एंड राइट द टेक्निक्स यूज इन द पर्स, बिकॉज ये आपका थॉट प्रोसेस शो करता है, ये आपकी नॉलेज शो करता है. यू डोंट हैव टू राइट एनी एंशिएंट टाइप ऑफ स्टोरीज इन द राइट अप. एक्चुअली दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू आर गोइंग टू मेंशन इन योर राइट अप, एंड इसके बेसिस पे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ डिजाइन इंस्पिरेशन, इफ यू आर आस्क्ड टू डिजाइन और स्केच एनी काइंड ऑफ फर्नीचर taking an inspiration from any kind of caterpillar or any kind of insect, then what are you going to write in your write-up? In your write-up, you are going to write, firstly, you are going to mention the inspiration. Second point, you are going to mention what are the elements of that inspiration which you have taken in your design. Now the third point is what kind of colors you have chosen and how are those colors complementing your inspiration and that whole product. The fourth point would be the whole design which you have made is a kind of prototype, is a kind of sketch only, and in future that product will be made in what, which material will it be in, would it be in acrylic, plastic का होने वाला है, metal का होने वाला है, आप इसको भी बताओगे. And the fifth most important point is the occasion or the client. It might be, अगर आप कोई फर्नीचर बना रहे हो, it might be for any conference room, it might be for any सिनेमा हॉल हो सकता है, या फिर आपके बेडरूम के लिए हो सकता है, आपके ऑफिस के लिए हो सकता है, तो आप इसको भी मेंशन करने वाले हो. एंड इफ इट इज पॉसिबल, आपको लगता है कि नो यू डोंट हैव टू मेंशन द एरिया और द लाइक ओकेजन कि किसके लिए बना रहे हो, देन you might mention your client also. So you can choose between the two कि आपको occasion mention करना है या आपको अपने client को mention करना है. So accordingly you are going to attempt the write up of design inspiration. अगर कोई product आता है, अगर कोई furniture आता है, कोई jewelry आती है, तो you have to take care about these 5 points only in your write up. Now the third important topic in which you have to write your write up if it is asked only then, and that is your logos. Now logos में आपने कौन से colors choose किए हैं and क्यों किए हैं and what are those colors depicting. If you have chosen any kind of shape, now that is based from shape psychology session 2. So if you have not watched that shape psychology session, go and watch it. So the way you have represented the logo, why you have taken the square shape, why you have taken the rectangle shape, what is it depicting, and why you have chosen the certain color, what emotion they are depicting. Have you chosen any color scheme? Is it a analogous color scheme? Is it a double split complementary color scheme? तो ये 3 points हैं जो आपको mention करने होंगे. Also what you can mention in your logos, the fourth important point, and that is if any kind of product category that brand is serving, तो बेसिकली किन कलर्स का यूज कर रही है वो कंपनीज, एंड हैव यू यूज्ड एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग ऑफ that product in your logo. If you have done that, you are going to mention that also. So these are the 4 important points which you are going to mention in your write up for logos. They are about color psychology, they are about color theory, about shape psychology, about the products that specific brand is using. Now guys, fourth type of question is about the t-shirt design. इसमें भी write up आ सकता है और नहीं भी आ सकता है. तो अगर नहीं आता है then you are not required to write anything. But अगर आप चाहो भी लिखना in 1 or 2 sentences, no one has stopped you and there is no negative marking in CAT, तो आप हमेशा लिख सकते हो. Like you can always explain about the inspiration you have taken, about
the colors you have chosen here also, and about the age group कि आप वो टी शर्ट किसके लिए बना रहे हो, is it for a teenager or is it for a middle aged man. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी चाहिए. यू कैन ऑल्सो मेंशन द फैब्रिक हियर कि व्हाट काइंड ऑफ फैब्रिक, ये क्या कॉटन है या फिर कोई लाइक्रा है या कोई स्पोर्ट्स वेयर है, किस चीज़ से इंस्पायर्ड है आपका पूरा डिज़ाइन एंड वो किस फैब्रिक पे जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ प्रिंटिंग is it having, it is going to be in a digital print or a screen print or a rubber print or a foil print. तो ये 3-4 स्पेसिफिकेशंस है जो कि आप सिर्फ टी शर्ट डिज़ाइनिंग में या फिर अगर क्वेश्चन डिज़ाइन कर रहे हो ऑन एनी थीम तो उस पर आप ये इस टाइप का राइटअप लिख सकते हो, इंक्लूडिंग ऑल दीज 4 important points. Futuristic designs, guys, when you get any kind of product that will be introduced after 30 years or after 40 years, and that is a futuristic design. So in that type of questions, what you are going to do, you can avoid the write-up, but you can always include the specifications कि what that particular button is depicting, क्या वो कहीं से flip होता है, क्या वो कहीं से transform होता है, ये सब आप specifications में use कर सकते हो. But also yes, आपको यहाँ पे भी कुछ write-up include करना होगा, like what kind of material will it be in the future, what is the technology that will be used in the future. And so guys, as I said कि futuristic designs में आप after 20 या 30 years के बाद जो technology आने वाली है उसके बारे में डिज़ाइनिंग करते हो, उसका आर्ट वर्क बनाते हो. सो हियर राइटअप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, राइटअप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पेसिफिकेशंस which you are seeing right now on the back of the screen. So you are going to write about every other button, every other flip हो गया या फिर उसका कोई क्लोजर हो गया या कोई अलार्म हो गया या एनी अदर सेगमेंट, लाइक दिस वाज अ फ्यूचरिस्टिक टिफिन जो कि आपके निफ्ट में आया था क्वेश्चन. So accordingly specifications are more important, and if you think that after specifications you want to write few more things like what will be the material and who will be the client of this particular टिफिन, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो. सो इस तरीके से व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू टेक केयर अबाउट दीज फ्यू पॉइंट्स इन योर फ्यूचरिस्टिक डिजाइंस. How it is going to. Now guys, the last topic is shape psychology. Under this topic, the write-up which you are going to write basically depends upon the type of question. If the question is asking about depiction of any kind of furniture inspired from shapes, then you have to just mention that what are the shapes you are choosing. And हर एक शेप का अपनी एक साइकोलॉजी है, like Y squares, Y rectangles, Y trapezium. And if you are taking any inspiration to depict that furniture, like हो सकता है कि जो आप फर्नीचर बना रहे हो that is inspired, that is very flexible and that is very soft, तो हो सकता है कि वो water से inspired हो सकता है कि वो wind से inspired हो. Then you are going to write about the attributes of water and wind in the second point. ठीक है. Now third point would be what are the colors you have chosen and why, what is the psychology behind those colors you have chosen. तो ये सारे parts, ये 3 parts आपको mention करना बहुत ज़रूरी है if you are writing a write-up for shape psychology question. So I hope guys कि आपको सारे write-up का part समझ में आ गया होगा from this session. If you have watched, अगर आपको लगता है आपने middle से ये वीडियो शुरू की है तो प्लीज़ इसको अच्छे से शुरू से देख लो. Your doubts regarding write-up will be completely cleared, and if you have any kind of query you can always come to my comment section and I'm always there to help you. And new students for 2022 aspirants, अगर आपको register करना है online classes के लिए then you can always come. You can contact us through the WhatsApp number जो कि screen पे flash हो रहा है, and my team will get in touch with you. And guys, best of luck for your exam. Till then, take care. Bye bye.